this caste coalition that has been built by Akhilesh in Purvanchal. The, do you think that there is any disturbance coming in from there and from the BJP camp now? And this attempt by the BJP camp, as Sunita was pointing out, of sort of trying to put Kesha Prasad Maurya in the forefront and keeping Yogi in the background. Well, she has money on the dot. When Sunita is telling about the damage control of the BJP as we look into it. And we have been looking at BJP doing the damage control for almost 7, 8 months now, Sunita, if I'm not Ah, wrong, since yes. all the seniors started gathering in Lucknow, Mhm. Now, it's funny thing that on one hand, people talk about Yogi as an asset, Yogi as a Hindutva icon, and everything. There are two interesting points for me. I mean, I have mentioned this earlier as well, Aditi. Uh, 2014 mandate of the BJP was purely on the face of Modi. 2017 was purely on the face of Modi, and so was 2019. Let's be very crudely honest, about this assessment. The votes came because of Modi, and whatever hemorrhage that we are witnessing, the damage that is being controlled is because of the chief minister. So I think it's not beyond the point. I mean, he is asset when you are looking into the Hindutva vote of the BJP, the core of the BJP. You can consider him an asset over there. But Hmm. if you will ask why the hemorrhage has started in the very first place, then Swita has actually hit where it hurts. It's only because of the way the chief minister functioned and the message went that the MLAs, particularly the OBC ministers and the MLAs, that कि ये minister ये chief minister हमारी इज्जत नहीं करता. You know, so all said and done, I mean, people don't say it that way, even though, I mean, when you look around, कि हेमरेज हो रहा है उसको डैमेज कंट्रोल आ रही है भाई डैमेज कहाँ हो रहा है तो वो सीधे यानी ज्यादातर एनालाइज करने के उसमें हम लोग आ पाते हैं कि दरअसल ये हेमरेज या डैमेज तो मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ है anger is if there is any anger then the anger is against chief minister in person. There is no again anger against prime minister. There is actually no anger against the BJP as well. There is not such as an anger against the government as such. Because on one big point on law and order, the mafia and everything, he has a USB he delivered over there. So all the on the social welfare scheme, the prime minister delivered over there. So if you look into the broader aspect, you will figure out कि लोग मोदी से नाराज नहीं है, सरकार से नाराज नहीं है, नाराज किससे हैं? तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत नाराजगी है या थोड़ी या बहुत, either ways you look at it, that is purely angered against personality of the chief minister, the way he functions. So I think in that damage control exercise, in the optics of it, they are just trying to take that part of the liability away from the public limelight, do the damage control so that it doesn't look that way. कि भाई हर जगह पे योगी हैं वो एक मैसेज भी जा रहा है कि हमारे पास में और भी लीडर हैं yet at the same time they are continuing with the yogi phase so that their hindutva lobby their hindutva core vote doesn't get a wrong signal that कि हमारे जो जो उनका फैन फॉलोइंग है उसको कोई गलत सिग्नल भी ना चला जाए सो दे यू विल सी आई मीन राइट नाउ द पीपल बहुत व्हिच यू आर बहुत वाचिंग सारी बहुत सारी नावों में एक तो वेलफेयरिज्म है, एक हिंदुत्व है, एक exactly. कास्ट So they इक्वेशन are है, just सब trying कुछ to navigate the things. बैलेंस करके So they चलना are पड़ रहा है. pacifying Yogi, keeping Yogi intact so that the Hindutva base doesn't get antagonized. Yet at the same time, BJP, you have to give one credit actually, Aditi. I mean, of course, people talk about electioneering, 24/7 politics and like that, blah, 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 blah. But uh, I think they are good in assessing कि उनकी गलती या उनका डैमेज कहाँ हो रहा है उनको उत्तराखंड में डैमेज लगा बदला दूसरा चीफ मिनिस्टर भी डैमेजिंग लगा उसको भी बदला सो दे आर वेरी गुड इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेरी क्विकली which other parties I believe are not that quick or not that assertive
So much so, Prime Minister who is accused of being very high-headed, not consulting anybody and not going back, even he went back on something like farm laws. देयर इज ऑलरेडी स्पेकुलेशन कि बीजेपी फील्ड करेगी आरपीएन सिंह को बद्रौना से, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे। तो दोनों ने, आपको क्या लगता है कि क्या एक इफेक्टिव ऑपोजिशन, एक चैलेंज दे पाएंगे आरपीएन सिंह? आपने खुद बोला कि वो इतने बड़े ओबीसी बिल्कुल। नेता के नाम से तो नहीं जाना जाते हैं। हाँ, लेकिन उस क्षेत्र में आरपीएन सिंह विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी अच्छी फाइट देंगे, क्योंकि उनके साथ बीजेपी का वोट बैंक जुड़ जाएगा, जो पहले नहीं था। कांग्रेस के समय में सिर्फ उनका अपना, कांग्रेस का अपना कोई बेस वोट बैंक तो है नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो जो भी लड़ाई वो लड़ते थे अपने वोट के आधार देते थे। तो उनकी अपनी वोट के साथ उनके हिंदुत्व के वोट जुड़ जाएंगे, हिंदू बीजेपी के वोट जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ही कैन गिव अ गुड फाइट। बट व्हाट आई वुड लाइक टू सबमिट, ये जो कास्ट एंड हिंदुत्व दोनों अलग अलग नहीं है। कास्ट आइडेंटिटी एंड हिंदुत्व आइडेंटिटी बोथ वर्क टुगेदर। और कई बार क्या होता है कि कास्ट आइडेंटिटीज इमीडिएटली आपको लगती है कि सफल हो रही है वो, बट अल्टीमेटली कई बार ये देखने को होता है कि हिंदुत्व आइडेंटिटी उसको अपने भीतर समाहित कर लेती है। हाँ, और यही फाइट एक लगातार, जैसे कुत्ते एक कहते हैं ना कि चलती रहती है, सांप और नेवले की लड़ाई की तरह, कास्ट आइडेंटिटी एंड हिंदुत्व आइडेंटिटी में। और ये आपको ढेर सारे केसेस में अगर आप माइक्रो स्टडीज करें जो जहाँ पर, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ऐसे ही हो रहा है। तो बीजेपी इज ट्राइंग हार्ड टू, ये जो रिसर्शन हुआ है, ये रप्चरिंग हुई है, उनको करेक्ट करने का एक बड़ा बैंडेज, अगर यशवंत जी के शब्दों में कहें तो बड़ा बैंडेज एक उसके पास, उसको उसके थ्रू करने की कोशिश कर रही है। और कास्ट साथ साथ कास्ट को उसमें डालती भी जा रही है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल गेम है इस बार का यूपी इलेक्शन में, और देखना है कि कैसे ये आगे बढ़ती है। बट अखिलेश यादव बहुत दूर तक कास्ट आइडेंटिटी की भाषा को ले नहीं जाते, शायद ले जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो एक सर्व समाज के वोट भी चाहते हैं उनको। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक वर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और वर्सेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करते। श्यामा प्रसाद मौर्य वगैरह ये बीएसपी के स्कूल से ट्रेंड लोग हैं, जहां पर यही भाषा में ही, इसी भाषा में बोलते ही थे। हालांकि बीएसपी ने अपनी भाषा ही बदल ली है, लेकिन ये बीएसपी के सेकंड फेज की भाषा, फर्स्ट फेज की भाषा आज तक अपने भीतर जिलाए हुए हैं। तो एक बड़ा कहते हैं ना, डिक्शन का शिफ्ट है पॉलिटिक्स में जो आया है, और वो शिफ्ट जो है वो मुझे लगता है कि अखिलेश शायद इसलिए उसको बहुत हाइटेन नहीं करते। उनकी भाषा बहुत एक अलग तरह की भाषा है, जिसमें क्योंकि उनका अपना वो मुस्लिम यादव वोट बैंक को ही उनको अपब्रिंगिंग रखना है, तो उसको लेकर साथ में चलना है। जी बेहतर बताएंगे, बिकॉज इनका तो काम ही किया है, हम लोग तो ज्यादा नहीं जानते। Sunita, you want to weigh in on Akhilesh's inability, as he's saying, of trying to cash in on this entire OBC composition? Look, you remember in 2018 when they had defeated the BJP candidate in Gorakhpur by poll, he had said one thing, that we have also found a formula. The formula is the same which Kashiram had established, that you hold your base vote, chase your core vote, and all that stuff. So what I think he has tried to do in a lot of constituencies, I have not done constituency by study, but a random look at it, that he has tried to make those caste formulas. For example, in Muzaffarnagar, which is a Muslim dominated district, where he has not given even one Muslim candidate. Why he has this confidence that perhaps this time Muslim will vote for, the Muslim will vote to defeat BJP. They will not support a Muslim candidate, but they'll prefer a party which is defeating BJP. But he may be wrong there also, because BSP has now fielded Muslim candidates, and it becomes a very interesting contest now. So he has used his own formula, caste formulas, wherein he has tried to come out of his Yadav image, that he's a Yadav leader. He's trying to emerge as a OBC leader, and UP doesn't have a OBC face right now. The biggest, the you can say the giant backward leader we have in the country is our Prime Minister. And as and when he wants, he projects his backward face. He's a Hindu face,
He's a He's a backward face. backward face. Correct. And and Narendra Modi and his face explains the politics of BJP also. They want Yeah, Hindu Hindutva, face, backward they face, Hindutva mean nationalistic backwards. face, Yeah. and Yeah, nationalistic. And nationalistic. and And nationalist. bottom of the So, pyramid. And bottom of Yeah, the and bottom pyramid. of the pyramid. So, That, yeah, matlab, that's precisely what their social, the social welfare schemes are aiming at. What he is actually aiming so much as a replica of social welfareism of Indira Gandhi in that way. Garib ka vote, that's where he is aiming at. So that bottom of the pyramid is also covered in